तो इसको बात के लिए ही रखते हैं फिर। जी आभा जी, आपका वैसे भी सेकंड पार्ट जो लास्ट में आएगा। एंड वी आर गोइंग ऑन जूम लाइव। जी। अतुल भाई, बी रेडी। अतुल भाई। हेलो। यस, यू कैन गो अहेड अतुल भाई। हेलो। रेवा लॉज वडोदरा, रोहित लॉज अमदावाद, ज्योति लॉज मुंबईના ઉપક્રમે આયોજિત ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના કર્ણાટક ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન, મુંબઈ ફેડરેશનના આજના પ્રવચન નવરાત્રી સ્પેશિયલ નવ માતા ઉર્જાના વક્તા હર્ષલબેન, હેતલબેન પંચાલ તેમજ આભાબેન તેમજ આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું। આજની સભાની શરૂઆત વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવું છું। O hidden life, vibrant in every atom. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feel himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. શાંતિ। શાંતિ। આજની સભાની શરૂઆત શ્રી તરલભાઈ મુનશીને કરવા કહું છું અને તેમને આમંત્રિત કરું છું। તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે। जी। हर्षल जी। Hello, sir. Yeah. Am I audible? Yeah, you are audible. Yes, sir. So can we start? Yeah, just I'll give you a brief intro and then we can start. Sure, sir. Sure. वेलकम टू ऑल थ्री स्पीकर्स। हर्षल जी के बारे में एक छोटा सा परिचय दे दूं। वे बीएससी हैं, BECSC है, केजी इंजीनियरिंग कॉलेज चेन्नई से। एमटेक किया है उन्होंने डाटा साइंस और मशीन लर्निंग की पीएस यूनिवर्सिटी बेंगलोर से। पार्ट ऑफ प्रोफेशनल उनका जो करियर है वो आईआईटी यंग प्रोफेशनल चेयर चेन्नई एंड बेंगलोर नेटवर्क से हुआ है एंड इज पब्लिक स्पीकर एंड स्टूडेंट्स एंड ट्रेनी फॉर आईआईटी इंडिया इन लैंग्वेजेस, many languages like Kannada, Tamil, Hindi, English, Telugu, and she is also in spiritual education. She is also pranic healer, a theosophist, and an ISKCON preacher trainer, and really she preaches very nice. स्टूडेंट काउंसिलर हैं भक्ति शास्त्री डिग्री होल्डर के, मायापुर इस्कॉन के। नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में भी डिग्री होल्डर हैं, सत्य साई बाबा पार्टी के। और काफ़ी सारे बच्चों के लिए भी उन्होंने प्रोग्राम किए हैं। यूथ लीडर हैं इस्कॉन की और पीएचडी हैं अस्ट्रा कैलिफोर्निया से। तो आपका स्वागत है, आप त्रिवेणी मीटिंग में आती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बड़े ही रोचक लेकिन एक अलग दृश्यति देने वाले विषय पर आपका स्वागत है। नवरात्रि, मदर ऑफ एनर्जी, ये कहा है आपने। थैंक यू। Thank you so much for a lovely introduction, sir. A very happy evening to everyone. A very happy Navratri, a very important 9 days and a very energetic 9 days. So to just give a kind of a roadmap of what we are actually going to look at today is basically about what is Navaratri, an esoteric, scientific and esoteric view of Navaratri, importance of all the 9 days, and what is the secret behind Navaratri and our life. So we're going to dive into this particular topic today, and let's all join together, discuss, deep dive into it. So starting with this, please allow me to start the session. Shri Gurubhyo Namaha. Navaratri
This festival signifies the number 9, celebrated over 9 days, with the 10th day known as Vijaya Dashmi, which means or stands for victory. During this time, we honor the feminine energy of the one supreme God, often referred to as mother energy. When we think of mother, we feel warmth, love, care, nurturing, protection from the negativity, and provision of all necessary. And this traits of feminine energy, these 9 days, we dedicate celebrating these feminine traits. The number 9 is believed a manifestation number. Therefore, it is commonly held that when we worship with full devotion, our wishes are manifested. From a spiritual perspective, our primary human goal is God realization, which encompasses various stages as described in theosophy. Our earthly journey is divinely orchestrated, providing us with festivals and their perspective of do's and don'ts. Our body has 9 doors or Navadwaras that opens and close with each breath, serving as the entry and exit of our souls. According to scriptures or shastras, there are 9 forms of devotions known as Navavida Bhakti. What is Bhakti? Bhakti or devotion is about following our teachers or divine guidelines or divine footsteps without questioning and with trust, with complete trust and dedication. When we embrace any of these 9 forms of bhaktis, we move towards achieving our spiritual goal as assured by our scriptures or shastras. So what are these 9 type of bhakti? So let's go into the 9 forms of bhakti. The first one is Shravanam, listening to the stories and glories of the divine. Kirtanam, singing, praising, and chanting the holy names. Smaranan, remembering the divine constantly. Padasevanam, serving at the lotus feet of the divine. Archanam, performing rituals and offering. Vandanam, offering prayers and respect. Dhasyam, seeing oneself as a servant of the divine. Sakhyam, developing a friendship with the divine. Atma Nivedanam, complete surrender to the divine. So, with this understanding, let's go forward and understand what is this Navratri about, the real meaning of Navratri. So, Navratri, if you see, it's about the trump of good over the evil. Our lower chakras represents the lower energy, such as anger, greedy, jealousy, hatredness, excessiveness, and lust. In the contrast, our upper chakras symbolizes the divine energies like devotion, love, care, compassion, moderation, understanding, and non-judgment. Now, when we scientifically, if we see, we have basically from 21st of March to 21st of September is the summer solstice. So I'll just briefly, explain about what is this solstice mean. So if you remember an earth and divide it into half. And the line that half is called as equator. So when it, kind of revolves one upper round and then come below here, one upper round is summer solstice, dot stops here, and then when it goes down, it's winter solstice. So this upper solstice, which is summer solstice, is 21st March to 21st September is called as summer solstice, which denotes light. And from September 21st to March 21st, it's winter solstice denoting the dark. Now, when we sow the seeds, in the light into the earth, the seed hatches in the dark, that is inside the earth and in the form of a plant. It again comes to the light. So in the winter solstice, we pray, worship only to harvest our summer solstice. That is the reason Navratri falls during the winter solstice.
Here we do hard worship like chanting, fasting, restriction in the food and drinks, and extract, etc. Our hard work is paid in the summer solstice in the form of manifestation. So now, if we, to brief, all the festival falls on the September to March is for the spiritual practices, and March to September is the harvesting or manifesting, process. If we see the calendar, we can, precisely look at it. So I request everyone to just go check the calendar and see all our festivals. Where does it falls, and which festival are, denotes spiritual activities, and which festivals are known for manifestation or are materializing our wishes. So in this context, when we move forward, so with this little understanding, let's move forward. As we know, Navratri is all about winning good over evil. In this context, the goddess mother signifies the spiritual energy, while Mahishasura represents the lower energy. According to a myth, Mahisha means laziness, material enjoyment, and stubbornness. So he was born to Rambha, a she buffalo. When we diligently follow our prescribed practices during this 9 days, spiritual energies from Sahasra, which is represented or which is known as a Shiva energy, descends and move towards all our chakra, eliminating all the lower energies, which is also known as like Mahisha. So using this weapon of discipline and determination and self-control. So this energy reaches. So this energy reaches the root chakra or the lower chakra. So lower chakra where Shakti is in the form of a collide serpent. So you would all known or heard about Kundalini. That is a collide serpent resides there. Successfully spiritual practices ignite the Kundalini energy, causing it to raise and purify our lower nature. Eventually, it reunites with the Sahasra. So when Shiva energy comes from here and the Kundalini arises from here, they both collide. So the union of Shiva and Shakti gives birth to a child, which is known as Vigneshwara or the Christ, which is otherwise known as self-realization or core realization or enlightenment or Mukti Marga, which is our ultimate goal. So now we'll briefly go through about all the 9 Durgas, the Navadurgas, and the respective mantras which helps to please the Durgas. So here the mantras will be recited by Minnal, my younger sister. So we will go through all the 9 Durgas one by one. So the first one is Shailaputri, daughter of the mountain. वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषरूढां शूलधारां शैलपुत्रीं यशस्विनीम्. Shailaputri. Shailamata is the Parashakti who was born as a daughter of the Lord of Himalayas. In Sanskrit, Shaila means mountain and Putri means daughter. After the self-immolation of Sati during the Daksha Yagna, she is born again as goddess Parvati or Shailaputri Devi and marries Lord Shiva. Goddess Shailaputri worshipped on the first day. It's known as Ashada Navratri or Gupta Navratri. Ma Shailaputri depicts as riding on a bull with a trishula in one hand and lotus in another, and a crescent moon on her forehead. Her other names are Parvati, Hemavati, and Vrisharudha, which is known as she mounts on the bull. Worshipping Shailaputri teaches the importance of groundness and purity in life. So now let's go to second form of Lord Ma Durga, which is uh, Brahmanachari, one who practices penance. दद्दानकरपद्माभ्याम् अक्षमालाकमण्डलो देवी प्रसीदातु मयि ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा.
Sorry for the break. So Jagat Janani Durga, the second incarnation, is Brahmacharini. Here, Brahma means austerity or penance or tapasya. Brahmacharini means tapascharani. She is pure Jyotirmayi, holding a japamala in her right hand and kamandala in her left hand. She did great penance to get Shiva as her husband, and approximately it's for 3,000 years. Her calm and focused demeanor is an inspiration for all seeking wisdom and knowledge, teaching us the value of inner strength and dedication to achieve the higher consciousness. Third, when we talk about is Chandraghanta, the goddess with bell-like crescent moon. पिण्डजा प्रवरारूढ छन्दकोपस्त्रकैर्युत प्रसादां तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता. This form of Durga symbolizes bravery and grace. With her third eye, she is always prepared to combat evil and negative forces. Her bell signifies the sound of divine, encouraging the devotee to remain vigilant and courageous while seeking the harmony and balance in life. So the fourth goddess is Kushmanda, the creator of the universe. सुरसम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दद्दान हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्ड शुभदास्तु मे. Don't worry, have some water. Yeah. Take it easy. I just choked. Thank you. Uh, just a moment. Yeah. Go ahead. Kushmanda is regarded as the creative energy behind the universe. Her radiant smile illuminates all direction, symbolizing the light of creation and hope. She represents the power of creation and mystery of life, inspiring a sense of gratitude and connection with cosmos. She stands for power of creation and self-confidence, urging people to recognize their inner potential to create and manifest. Skandamata, mother of Skanda or Kartikeya, the god of war. सिंहासनं गता नित्यं पद्माश्रितकरद्वयं शुभादास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी. Skandamata is the motherly aspect of Durga, embodying nurturing, compassion, and protection. She rides on a lion and holds her son, Lord Skanda or Kartikeya, in her arms. Worshipping her brings blessing of protection, well-being, and prosperity. She teaches the importance of balancing both professional and personal responsibility with maternal care. The sixth, we talk about Katyayani, the warrior goddess born to sage Katyayan. चन्द्राः सूज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायिनी शुभं दद्या देवी दानवगात्री. Katyayani represents the power and the destroyer of evil. She is worshipped for her ability to remove obstacle and protect from harm. As a fierce form of Durga, she symbolizes righteous anger and the destruction of negative forces, encouraging devotees to confront and eliminate the darkness within and around them. So the seventh Durga we're talking about is Kalaratri, the dark and fearsome goddess. एकवेणी जपाकर्णा पूरणालङ्करा स्थिता
लम्बोष्टि कर्णिकारकर्णी तैलव्यक्ता शरीरिणी. Kalaratri is the purest form of Durga, representing the darker, destructive aspect of life that are necessary for transformation and renewal. She is the remover of fear, negative energies, and ignorance. Despite her terrific appearance, she brings peace and removes suffering, showing that the destruction of ego and negative leads to ultimate liberation. The eighth one, Mahagauri, the radiant and pure goddess. श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधर शुचिः महागौरी शुभं दद्यात् महादेवी प्रमोददः. Mahagauri signifies purity, sternity, and peace. After the intense transformation seen in Kalaratri, Mahagauri is the soothing aspect of Gauri, who grants forgiveness and purity of mind and spirit. Worshipping her leads to spiritual clarity, and she is often invoked for wisdom and relief from life difficulties. The ninth and the last form of the Lord Durga is Siddhadhatri, the bestower of supernatural powers. सिद्धगन्धर्वयक्षदेहि असुराहि अमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायि. The ninth form is Siddhidhatri, is the goddess who bestows various siddhas, spiritual powers, to her devotees. She represents the culmination of the spiritual journey where one attains wisdom, knowledge, and enlightenment. Siddhadhatri helps the seeker merge with the divine consciousness, symbolizing the final stage of self realization. Finally, the main mantra, which we all have heard, is Chamunda mantra. So I would request everyone, as and when I recite, to repeat after me. Om Haim Hrim Klim, Klim Klim, Chamundaya Chamundaya, Vichaye Namaha. Nichye Namaha. So this is known as Chamundi mantra, meaning Om, the salutations to she who is radiant with power and wisdom. So the benefit of this mantra is to increase the strength of mind and body are the main benefit that can be obtained from this mantra. Chanting it with deep concentration will slowly bring about a positive changes in one's attitude. So Thank you. basically, to culminate, the worship of Navadurga during Navaratri is symbolic to trump over good over will, the importance of balance between action and wisdom. Each form of Durga reflects the various challenges faced in life and how they are to be overcome by cultivating the inner strength, wisdom, and compassion. The cycle of the nine Durgas teaches devotees to transform their negative qualities such as fear, ignorance, and selfishness into virtues like strength, knowledge, and selflessness. Through this worship, the devotees are reminded the cyclic of nature of life and the importance of perseverance, devotion, and inner transformation. Navadurga not only represents the divine feminism or femininity, but also illustrate the multifaceted nature of human experience and its growth. So here we come to an end of part one. यस, हेतल जी, प्लीज आपका वीडियो ऑन कीजिए. जी सर. हेतल जी, Yeah. yeah. I'll give a brief introduction of Hetal ji. Hetal Panchal is a teacher for 16 years. 16 साल से वे पढ़ा रही हैं, सोशल वर्कर हैं, गर्ल्स के फ्यूचर्स के लिए काम करती है. उनका अपना एक एनजीओ है और बहुत सारे फीमेल्स के लिए वो काम करती हैं. और थराड सिटी में जो लायंस क्लब की मेंबर हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी बहुत सक्रिय रूप से कार्य करती हैं. त्रिवेणी में पहले भी आ चुकी हैं. आपका स्वागत है.
हर्षल जी बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद, आपने बहुत खूबसूरती से विषय को रखा। पार्ट 2 में आपका इंतजार रहेगा। हेतलबेन, प्लीज गो अहेड। Okay, thank you, sir. Thank you very much. In Gujarati, નવરાત્રી આ 9 નંબરનો સંકેત આપે છે, જે 9 દિવસ સુધી ઉજવવામાં આવે છે, જેમાં 10મો દિવસ વિજયાદશમી તરીકે ઓળખાય છે, જે વિજય માટે વપરાય છે. આ સમય દરમિયાન અમે એક સર્વોચ્ચ ભગવાનની નારી ઉર્જાનું સન્માન કરીએ છીએ, જેને ઘણી વખત માતૃ ઉર્જા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જ્યારે આપણે માતા વિશે વિચારીએ છીએ, ત્યારે આપણે હું, પ્રેમ, સંભાળ, પાલન પોષણ, નકારાત્મકતા સામે રક્ષણ અને આવશ્યકતાની જોગવાઈ, સ્ત્રી સાથેની સંકળાયેલા તમામ લક્ષણો અનુભવીએ છીએ. આ 9 દિવસો આ ગુણોની ઉજવણી માટે સમર્પિત છે. 9 નંબરને એક અભિવ્યક્તિ નંબર માનવામાં આવે છે. તે સામાન્ય રીતે એવું માનવામાં આવે છે કે જ્યારે આપણે સંપૂર્ણ ભક્તિ સાથે પૂજા કરીએ છીએ, ત્યારે આપણી ઈચ્છાઓ પ્રગટ થાય છે. આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિકોણથી આપણું પ્રાથમિક માનવ ધ્યેય ઈશ્વરની અનુભૂતિ છે, જે થિયોસોફીમાં વર્ણવ્યા મુજબ વિવિધ તબક્કાનો સમાવેશ કરે છે. આપણી પૃથ્વીની યાત્રા દૈવી તરીકે ગોઠવાયેલી છે, જે આપણને તહેવારો અને તેના સંબંધિત કાર્યોને અને શું ન કરવું પ્રદાન કરે છે. આપણા શરીરમાં 9 દરવાજા છે અથવા નવદ્વારો, જે દરેક શ્વાસ સાથે ખુલે છે અને બંધ થાય છે, જે આપણા આત્મા માટે પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાનું બિંદુ તરીકે સેવા આપે છે. શાસ્ત્રો અનુસાર ભક્તિના 9 સ્વરૂપો છે, જેને 9વિધ ભક્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે ભક્તિ શું છે? ભક્તિ અથવા ભક્તિ એ આપણા શિક્ષકો અથવા દૈવી માર્ગદર્શિકાઓ અથવા કોઈ પ્રશ્ન વિના અને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ અને સમર્પણ સાથે અનુસરવા વિશે છે. જ્યારે આપણે ભક્તિના આ 9 સ્વરૂપમાંથી કોઈ પણને સ્વીકારીએ છીએ, ત્યારે આપણે આપણા આધ્યાત્મિક ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા આગળ વધીએ છીએ. જેમ કે આપણા શાસ્ત્રો દ્વારા ખાતરી આપવામાં આવી છે, એમ જ ભક્તિના તો 9 પ્રકાર છે. પહેલો પ્રકાર છે શ્રવણમ, પરમાત્માની વાર્તાઓ અને મહિમા સાંભળવું. બીજું છે કીર્તનમ, સ્તુતિ ગાવી અને પવિત્ર. ત્રીજું છે સ્મરણમ, પરમાત્માનું સતત સ્મરણ કરવું. ચોથું છે પદ સેવનમ, પરમાત્માના ચરણોમાં સેવા કરવી. અર્ચનમ, ધાર્મિક વિધિઓ અને અર્પણો કરવા. વંદનમ, પ્રાર્થના અને આદર આપવો. દાસ્યમ, પોતાને પરમાત્માના સેવક તરીકે જોવું. સખ્યમ, પરમાત્મા સાથે મિત્રતા કેળવવી. આત્મનિવેદનમ, પરમાત્માને સંપૂર્ણ શરણાગતિ. આ સમજ સાથે ચાલો આપણે આગળ વધીએ. નવરાત્રી એ અનિષ્ટ પર સારાની જીત વિશે છે. આપણા નીચલા ચક્રો, ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષા, નફરત, અતિશયતા અને વાસના જેવી નીચલી શક્તિઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેનાથી વિપરીત આપણા ઉપલા ચક્રો ભક્તિ, પ્રેમ, સંભાળ, કરુણા, મધ્યસ્થતા, સમજણ અને બિન ચુકાદા જેવી દૈવી શક્તિઓનું પ્રતીક છે. આ સંદર્ભમાં માતા દેવી આધ્યાત્મિક ઉર્જા દર્શાવે છે, જ્યારે મહિષાસુર નીચલી શક્તિઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. પૌરાણિક કથા અનુસાર મહિષા આળસ, ભૌતિક આનંદ અને જીદનું પ્રતીક છે. તેનો જન્મ રામબા અને એક ભેંસથી થયો હતો. જ્યારે આપણે આ 9 દિવસો દરમિયાન આપણી નિર્ધારિત પ્રથાઓને અકંતપૂર્વક અનુસરીએ છીએ, ત્યારે શિવ દ્વારા રજૂ કરાયેલ સહસ્ત્રમાંથી આધ્યાત્મિક ઉર્જા, શિસ્ત, નિશ્ચય, સ્વનિશ્ચયના શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરીને આપણી નીચલી શક્તિઓ જેમ કે રાક્ષસો અથવા મહિષાઓને દૂર કરીને તમામ ચક્રોમાંથી નીચે ઉતરે છે અને આગળ વધે છે. નિયંત્રણ, પ્રેમ અને ઈચ્છા શક્તિ, આ ઉર્જા મૂળ ચક્ર સુધી પહોંચે છે, જ્યાં વીંટળાયેલ સર્પ કુંડલીના રૂપમાં શક્તિ રહે છે. સફળ આધ્યાત્મિક પ્રથાઓ કુંડલીની ઉર્જાને પ્રજ્વલિત કરે છે, જેના કારણે તે આપણા નીચલા સ્વભાવને ઉગે છે અને શુદ્ધ કરે છે. આખરે સહસ્ત્ર સાથે પુનઃ મિલન થાય છે. શિવ અને શક્તિનું મિલન આત્મ સાક્ષાત્કાર તરફ દોરી જાય છે, જે આપણું અંતિમ લક્ષ્ય છે. સર, હવે જે આપણે પેલું નવદુર્ગાનું વાત થયેલી હતી,
હેલો બોલો. હેલો હાજી હા બોલો. સર, જે નવદુર્ગાની વાત થઈ હતી એમાં ફર્સ્ટ આપણે જે ટૂંકમાં સાર કહી દઉં કે આની આપણે જો વિશેષ માહિતી લેવી હોય સર તો ચંડી પાઠ આવે છે અને ચંડી પાઠમાં આ જે નવે નવ દુર્ગાઓનું આપણને આત્મવિશ્લેષણ આપેલું છે સર એમાં. અને આના વિશે મને સર થોડું ખ્યાલ નથી આવ્યો એટલે હું આને સ્કીપ કરી રહી છું સર. ના કઈ વાંધો નહીં, ગો એન્ડ યોર પાર્ટ 2 જ્યાં થતો હતો અને પછી આપણે આગળ વધીએ. ઓકે, પાર્ટ 2 લઈ લો ને. હેલો, પાર્ટ 2 પછી લેશું. ઓકે સર, ઓકે ઓકે ઓકે, Thank you. નોટ એન ઇશ્યુ. ઓકે. आपका स्वागत है आभा जी। और जैसा कि वो पार्ट जो उन्होंने ऐड किया था उसको आप जिस तरह से भी लेना चाहें इसी भाग में ले लीजिएगा। और एक छोटा सा परिचय, आभा जी तो हमेशा संक्षिप्त परिचय में ही मानती हैं और लिखती भी वही हैं, लेकिन इस संक्षिप्त परिचय में भी बहुत गहराई है। संस्कृत की टीचर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सितारिस्ट हैं, योगा की वेलनेस कोच हैं और वो एक स्पिरिचुअल सीकर हैं। अहमदाबाद से जुड़ी हैं हमसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब पार्ट 1 की ओर आप चलें। धन्यवाद जी आभा जी। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। या ओके गो अहेड। ओके। यहाँ पर उपस्थित सभी स्वाध्याय प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो, बहुत बहुत ब्रह्म वंदन जो आप समय निकाल के यहाँ उपस्थित हुए स्वाध्याय में। फ्रेंड्स, शुरू कहना चाहूंगी कि हमारे भारतीय त्योहारों की परंपरा में वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। एक हमारी चैत्र नवरात्रि है, अप्रैल में आती है, उसको चैत्र नवरात्रि बोले, जो चैत्र के, और दूसरी हमारी शारदीय नवरात्रि है जो मंथ में मनाई जाती है, महीने में। ये है इस वक्त जो हमारा शारदीय नवरात्र है, इसमें हम देखेंगे कि वो भी 9 दिनों तक ही मनाई जाती है। शारदीय दिन है वो विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो विजय का, और ये जो हमारा समय है जो बहुत ऑस्पिशियस वक्त जो हम हैं, वो ईश्वर की जो सर्वोच्च स्त्री सत्ता जो ऊर्जा के रूप में विद्यमान है समस्त, हम उसका सम्मान करते हैं और इसको हम कहते हैं माँ की मदर एनर्जी। जब हम माँ के बारे में सोचते हैं तो हम गुण ध्यान आते हैं, गर्मजोशी, प्रेम, देखभाल, से सुरक्षा, और हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो माँ करती है, ये मदर फिगर ही कर सकती है। ये सभी जो मैंने आपको विशेषताएं बताई ये स्त्रीलिंग से जुड़, और ये जो 9 दिन हैं ये इन्हीं 9 गुणों का उत्सव मनाने के लिए होते हैं फ्रेंड्स। ये 9 जो संख्या है ये बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा सृजनात्मक है। ये 9 का जो 9 सृजनात्मक है, और ये माना जाता है कि जब हम पूजा करते हैं यानी 9 दिनों में उस ऊर्जा, तो हमारी इच्छाएं भी पूर्ति होती हैं, यानी हमारी लौकिक और पारलौकिक कामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। अब आध्यात्मिक दृष्टि तो मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति है, चरणों में ये प्राप्ति होती है। थियोसॉफी में भी हमने पढ़ा है। हमारा जो सांसारिक जीवन है ये भी एक डिवाइन के उस दिव्य रूप से एक प्लानिंग है, इसकी बहुत ही एक योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है, और ये हमें त्योहार मनाए इसके भी कुछ नियम हैं, उसके माध्यम से निर्देशित
हमारे शरीर में भी 9 द्वार हैं। देखिए 9 संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं शरीर में भी नवद्वार कहते हैं, ये शरीर पूरा नवद्वार कहलाता है। और सांस के साथ हमारे जो द्वार हैं ये हमारे खुलते और बंद रहते हैं। और प्रवेश के और निकास के, ये दोनों के द्वार के, यह नवद्वार है पूरा। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगी कि ये 9 दिन जो है हमारे रात्रि में, जो बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगी मैं, कि जो पहला दिन है ये ऊर्जा की उपासना हो रही है। तो पहला दिन हमने क्या कर दिया है, जो फर्स्ट डे हमारा होता है उसको शैलपुत्री। शैलपुत्री की आप जब सुना होगा तो कहानी आई थी कि माँ जो सती थी, जो ही दोबारा जन्म लिया हिमालय के घर, और वहां पर्वतराज ये जो है पूरी तरीके से ये किसके प्रतीक है? प्योरिटी की प्रतीक है, बहुत ही ज्यादा। हमारे जीवन में ग्राउंडनेस, यानी पर्वत जैसे स्थिर होता है वैसे ही ग्राउंडनेस उसकी प्रतीक है। और दूसरी प्योरिटी, जीवन में पवित्रता की प्रतीक है, उनकी हम पूजा करते हैं। दूसरी है ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी का जैसे नाम से ही स्पष्ट है, ब्रह्म जिसको कहते हैं, तपस्या जिसको कहते हैं, तो ये तपस्या ब्रह्मचारिणी के रूप में देवी ने ही तपस्या की थी और लगभग 3000 साल तक तपस्या की थी। तो ये जो बेसिकली ब्रह्मचारिणी के रूप में जो हम दूसरा प्रतीक मानते हैं, दूसरा जो हम नवरात्रि मनाते हैं, वो बेसिकली ब्रह्मचारिणी के रूप में मनाते हैं, वो तपस का प्रतीक है। तो जीवन में बिना तपस के साधना जो है वो अधूरी रहती है। तो तपस बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इनको दर्शाया गया है। इनके 2 हाथ हैं, इनके एक हाथ में कमंडल है और दूसरे में माला है, तो वो तपस का प्रतीक है। तीसरी माँ चंद्रघंटा आती है। चंद्रघंटा जैसे नाम से स्पष्ट है, इनके जो है ये मस्तक पर अर्धचंद्राकार जो घंट है वो सुशोभित है। इनके 10 हाथ माने गए हैं फ्रेंड्स, और जिनमें अस्त्र शस्त्र हैं। तो ये जो माँ चंद्रघंटा है ये वीरता और शौर्य की प्रतीक मानी जाती है माँ चंद्रघंटा। चौथी माँ कुष्मांडा हुआ। माँ कुष्मांडा जो है, इनका जो जन्म है वो सूर्य के अंदर माना जाता है, यानी इनके अंदर इतना दैदीप है, इनका पूरा शरीर कांतिमान है। तो इनका जो शरीर है वो सूर्य के अंदर से उत्पन्न हुआ है। तो ये जो है सूर्य की भांति इनका, इनके शरीर में और इनके मुख पर तेज माना जाता है। और ये भी अपने भक्तों को आदि व्याधियों से मुक्त करती हैं और उनको सुख समृद्धि प्रदान करती हैं फ्रेंड्स। और इसका जो बीज मंत्र है वो है ऐं ह्रीं देव्यै नमः। और दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हमारा जो चौथा जो ये है, चौथा कुष्मांडा ही था। पांचवा हमारी स्कंद माता के रूप में है। तो स्कंद माता जो है ये कुमार कार्तिकेय की माता हैं, जिनको स्कंद भी कहा जाता है, उनका दूसरा नाम है। तो उनका जो है ये माता कार्तिकेय की माँ होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी 4 भुजाएं मानी गई हैं। 2 भुजाओं में कमल पुष्प हैं जो ज्ञान के प्रतीक हैं। एक हाथ में कुमार कार्तिकेय को गोद में पकड़े हुए हैं जो वात्सल्य का प्रतीक है। देवी के अंदर वात्सल्य है, तो वो गोद में जो पकड़े हुए हैं वो वात्सल्य का प्रतीक है। और एक भुजा अभय मुद्रा में है जो सदैव भक्तों के लिए होती है। तो माता का ये जो रूप है ये ममता, मूर्ति, प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक है। तो ये हमारी 9 ऊर्जाओं में ये वात्सल्य भी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। फिर हमारी माँ कात्यायनी आई 6th डे। ये कात्यायनी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ये कहते हैं कि महर्षि कात्यायन ने उस वक्त जो था, महिषासुर नामक राक्षस का बहुत अत्याचार था, तो उससे मुक्ति पाने के लिए कात्यायन ऋषि ने माँ की पूजा की थी। और उनका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिदेव ने अपने अपने तेज का अंश देके देवी को उत्पन्न किया था। और इनके तपस्या से ही ये माँ प्रसन्न हुई और उनके घर पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। फिर उन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया और देवताओं और सभी जो सामान्य मानस हैं उनको आतंक से मुक्त किया था।
तो माँ कात्यायनी का स्वरूप जो है वो सोने के समान माना गया है। इनकी 4 भुजाएं मानी गई हैं। एक हाथ में अभय मुद्रा जो हमेशा भक्तों के लिए होती है, दूसरी वरद मुद्रा में है। एक हाथ में तलवार है जो बुराई के ऊपर अच्छाई का प्रतीक है। और देवी कात्यायनी का जो गुण है वो बेसिकली रिसर्च है, शोध कार्य है। इसीलिए वैज्ञानिक युग में, हमारे आज के युग में, माता कात्यायनी का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर हमारा अगला जो स्वरूप है वो माँ कालरात्रि है। ये माना जाता है कि रक्त बीज नामक एक राक्षस था, उसको मारने के लिए पार्वती जी ने स्वयं अपनी शक्ति से, यानी शिव जी की प्रार्थना पर पार्वती जी ने अपनी शक्ति से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। और उस राक्षस की विशेषता थी कि उसके जहां जहां बूंद पड़ती थी रक्त की, वहीं वहीं एक नया राक्षस पैदा हो जाता था फ्रेंड्स। तो देवी के रूप में, यानी माँ कालरात्रि के रूप में, वो उन्होंने उस रक्त को ही पान कर दिया, उसको जमीन पे गिरने से पहले ही उसका पान कर लिया और उसका वध किया। तो ये माँ का रौद्र रूप है, ये ऊर्जा का एक तरीके से रौद्र रूप है। और बेसिकली ये ईगो का, नेगेटिविटी के ऊपर भी पॉजिटिविटी की जो विजय है, हमारी नकारात्मक ऊर्जाओं के ऊपर जो सकारात्मक ऊर्जा है उसकी विजय है। और बेसिकली अहम का विनाश है। ये रक्त बीज जो है हमारे अहंकार का सूचक है, ये उसके विनाश में है। फिर हमारा एक आती है महागौरी। महागौरी जो है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गौर वर्ण है इनका। और शिव जी को प्राप्त करने के लिए इन्होंने बहुत तप किया था। तब से इनका जो शरीर था वो काला पड़ गया था, इतना उन्होंने तप किया, इनकी शरीर की कांति चली गई थी। तो शिव जी बाद में प्रसन्न हुए और इनसे विवाह करने को राजी हुए, और उन्होंने गंगा का जल छिड़ककर इनके रूप को, इनके रंग को गौर कर दिया, गोरा कर दिया। इनके जो हाथ हैं, इनके 4 हाथ माने गए हैं। एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ अभय मुद्रा में है, एक हाथ में डमरू है, और नीचे वाला हाथ जो है वो वर मुद्रा में है। तो इनकी सवारी बैल मानी जाती है, और इनका स्वरूप शांत है, बहुत ही शांति की प्रतीक है ये महागौरी जो है। ये बेसिकली विजडम की प्रतीक है, विवेक की। ज्ञान और विवेक ये दोनों बहुत जरूरी हैं। तो विवेक इज द डिस्क्रिमिनेशन पावर, जो अच्छे और बुरे के बीच का अंतर बताता है वो विवेक होता है। तो ये उसकी प्रतीक मानी गई है, विजडम की प्रतीक मानी गई है। फिर हमारी माँ सिद्धिदात्री आती है। नाम से स्पष्ट है, तरह तरह की सिद्धियों को देने वाली है। इनकी भी 4 भुजाएं मानी गई हैं। एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में शंख है, और ऊपर के हाथ में कमल पुष्प है। कमल पुष्प माता के हर हाथ में है, आप देखेंगे। तो माँ सिद्धिदात्री की कृपा से शिव जी का जो आधा स्वरूप था वो स्त्री का हो गया था, इन्हीं की कृपा से। इसीलिए वो अर्धनारीश्वर कहलाए फ्रेंड्स। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, आत्म साक्षात्कार की जो है ये प्रतीक मानी गई हैं। और इन्हीं की कृपा से जो है शिव जी जो है, शिव जी को 8 हमारी जो है सिद्धियां मिली फ्रेंड्स, सिद्धिदात्री के रूप में। तो इस प्रकार हमने देवी के जो है 9 रूप जो है वो बेसिकली ऊर्जा के प्रतीक है। अब हम आते हैं भक्ति क्या है। तो भक्ति का मतलब है कि अपने जो भी गुरु हैं और जो डिवाइन है उसके निर्देश जो दिए गए हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उनका बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी क्वेश्चन के समर्पण भाव से उनका पालन करना और विश्वास के साथ पूरी समर्पण करना है। अब हम इन भक्ति के भी 9 रूप हैं। तो जैसे जैसे हम भक्ति के 9 रूपों का पालन करेंगे, जो मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूं, तो हम अपनी स्पिरिचुअल जो हमारा गोल है, जो हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य है, उसके लक्ष्य की ओर हम सरलता से बढ़ते जाते हैं। ये 9 रूप है: श्रवण, सुनना, दिव्य कथाओं और महिमा को सुनना, दूसरा कीर्तन, भगवान के नाम का जप और उनकी स्तुति करना, फिर स्मरण करना, उस दिव्यता के बारे में निरंतर स्मरण करते रहना, फिर पाद सेवनम, ईश्वर के चरणों की सेवा करना, फिर अर्चनम, यानी उस ईश्वर के अनुष्ठान और उसको पूजा और अर्पण करना, जो हमारे यहाँ सनातन धर्म का एक मुख्य अंग है। फिर वंदनम, यानी ईश्वर की प्रार्थना करना और उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना।
फिर दास्य भाव, ये एक भाव है बेसिकली। दास्य का मतलब होता है कि खुद को हम भगवान का सेवक माने, है ना, ये दास्य भाव कहलाता है। फिर सख्यम, एक सखा का भाव होता है, भगवान के साथ हम फ्रेंडशिप कर लें, एक मित्रता स्थापित कर लें, ये भी एक भाव है। इस भाव से भी हम ईश्वर को याद कर सकते हैं। और एक आत्मनिवेदनम, ये हमारा नवा है, उस दिव्य के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पण, टोटल टोटल सरेंडर, उसको हम आत्मनिवेदन कहते हैं। ये जब हम इस समझ के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हम ग्रो करते हैं आगे आगे, तो हम आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर पहुंचते हैं। तो बेसिकली नवरात्रि क्या है? बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। और जो हमारे निचले चक्र हैं, जो हमारे स्पेशली मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये जो है ये बेसिकली हमारी नेगेटिव ऊर्जा के प्रति इनके अंदर रहती है। क्रोध, ईर्ष्या, लालच, घृणा, ज्यादा और लें, यानी रजोगुण की ज्यादा अधिकता, काम वासना, ये हमारी लोअर जो एनर्जी है इसके प्रतीक हैं। और जो हमारे ऊपरी चक्र हैं, स्पेशली विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, अनाहत इसमें बीच में जोड़ने का काम करता है। तो ऊपर के जो चक्र हैं वो हमारे भक्ति, प्रेम, करुणा, ये जो हमारे सत्गुण हैं, जिसको कहते हैं सतोगुण, उसके प्रतीक हैं और उसकी ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। तो जब हम इसके संदर्भ में बात करते हैं, तो जो हमारी देवी हैं, जो वो डिवाइन पावर है, फीमेल डिवाइन पावर, वो आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। और जो महिषासुर है वो हमारी निचली ऊर्जा का प्रतीक है, जो हमारी लोअर एनर्जीज हैं, जो हमारी निम्न वासनाएं, उनका प्रतीक है। तो कथा भी कही गई है कि महिषासुर जो आलस्य, फिजिकल हमारे जो प्लेजर्स हैं उनका और हठ धर्मता का प्रतीक माना जाता है। तो जब हम इन 9 दिनों के दौरान बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में, ये बहुत जरूरी है, अनुशासित रूप में अपने निर्धारित नियमों के हिसाब से चलते हैं, उनका पालन करते हैं, तो सहस्त्रार ये शिव का माना गया है। शक्ति को कुंडलिनी माना गया है, जो नीचे बैठी हुई है। जब हम साधना के द्वारा इसको धीरे धीरे ऊपर लाते हैं, तो वही जो शक्ति है वो ऊपर जो है वो सहस्त्रार में जाके मिल जाती है, जो शिव का प्रतीक माना गया है। तो शिव का शक्ति से मिलन इसी को कहा जाता है फ्रेंड्स। तो आध्यात्मिक ऊर्जा जब उतरती है और हमारे सभी चक्रों में से होकर निकलती है, तो हमारी जो निचली ऊर्जा है उसको हम अनुशासन, दृढ़ संकल्प, आत्मनियंत्रण, प्रेम और इच्छा शक्ति के माध्यम से उसको हम निचली ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे वो बदल जाती है, रूपांतरित हो जाती है, हमारी हायर एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये ऊर्जा जो है जड़ चक्र तक पहुंचती है, नीचे, सॉरी, ये नीचे से ऊपर से नीचे आती है, और जब ये नीचे पहुंचती है जहां पे कुंडलिनी है, कुंडली के रूप में ये बैठी हुई है मूलाधार चक्र में, तो ये धीरे धीरे जो है जब ये जगती है, हम इसको जगाते हैं साधना द्वारा, प्रयत्न करके, और ये शुद्ध होती जाती है, और हमारे जो लोअर एनर्जीज हैं उनको भी प्योरीफाई करते करते सहस्रार से जा मिलती है। और यही शिव शक्ति का जो मिलन है, ये आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, जो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है फ्रेंड्स। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतने धैर्य के साथ सुना। जी आभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः हर्षल जी को आग्रह करूंगा कि वे अपना पार्ट 2 पूर्ण करें। ओवर टू यू हर्षल जी। Thank you, sir. Thank you, sir. So coming back, so now the part 2 speaks about the esoteric meaning of Navaratri. So before even talking about it, I would just give some facts. Hence, I am from the state of Karnataka, and I'm very close to the place called Mysuru, which you've all heard that Mysuru Dasera is world famous. And you might have also heard about this Chamundeshwari temple, which is there in at a hill in Mysore. Why it is famous? So apparently, in Shastras, and according to historic event, when Chamundeshwari, Ma Durga, she killed Mahishasura. So you know that so much of energy comes out. So while after killing, so when she, to calm her anger, that's where Shankaracharya composes this Ayagiri Nandini, which you would have all heard. So that's the place where Shankaracharya composes that Ayagiri Nandini, and calms down goddess.
and it is believed that goddess is still there, protecting the city, protecting the country, protecting the world. So again, some of the esoteric meaning here is, during the 9 days, we, in the first part we spoke about saying that we are supposed to go according to the rules and regulations, do our practices, prescribed practices. So it's not confined only to the 9 days. It is just a depiction which God's saying that, see, you have to do this when you go through all your practices regularly, do it regularly. That's where you come to a result. So here, if you've heard about this Ayut Puja, where we do puja for our vehicles, for our laptops, for whatever weapons we have at home, it shows that because of these things only I'm able to be successful. So example, I can aram se I can go to my office because of my car. So that is a weapon to me, to why, to become successful. So I respect my weapons. So my weapons can be differ to anyone. For some people, it will be a pen. For some people, it will be with a paintbrush. For some people, it might be their scissors, because they might be a great designer or tailor. So everyone has different weapons for getting successful materially. So here the Ayush Puja depicts two things. One is success material, and one, you're showing to the Lord that you are achieving success material, but you are not tangling in that success material. You're doing such practices, example like japa, tapa, reading, doing different austerities to the Lord. So you are successful in the world, but you're also untouched by the result. So you're saying that, God, finally I am, trying to get the realization that you have given best of the best opportunities for that, and I know I'm very grateful for it. Yet I want to realize you. So Ayat Puja is of that sort of view, where you show the gratitude of whatever opportunities God has given for us to materially achieve, but yet what they expect, what God expect from us, is that to go back to them. So here I will talk about a grand festival which is worldwide famous in the world, which is Jambu Savari. So here the goddess Chamundeshwari. So Ma Durga in southern part of the India is called as Chamundeshwari. So she's got in a very grand procession, which is called as Jambu Savari, elephants, the different paraphernalias. So what does elephant depict? It depicts prosperity, it depicts strength, it depicts royalty. So here, we welcome goddess, we welcome our God with that kind of um, high celebration, which says that we kind of appreciate her, what she's done for us. So during these 9 days, we have to be, like, we should contemplate and see that what are my strengths, what way I can succeed in my life materially, and what way I can succeed in my life spiritually. Because if you do not do any work and you say that I want, get into spiritual, I want spiritual energy, I want to become one with the Lord, it is not possible. So both, you have to balance between material success and spiritual success, because ultimately we are in Kali Yuga, where we do not have such power that we say that, no, we'll become sannyasi, we'll fight back all the material desires. If God blesses, we could. There's no for it, we could, but we are all in Kali Yuga, where we are entangled in Maya. So here we should balance between our material success and the spiritual success. So that's what, the balance. Navaratri basically talks about the balance in your life. How can you make peace with, spiritual practices and with your material needs? Most of the time, including me, I will not exclude me, including me. I will say, oh my God, I have so much of work to do in office. I can't do japa, I can't read books. But somewhere you should believe that you're also working for organizations to bring money. But what about this organization? What about this organization? The soul inside you is waiting for some returns. So the soul doesn't want this Gandhi Tata paper. The soul wants, the pure connection with the Lord. So you have to balance both, because you need this body to do material work, you need this body to do spiritual work. But the difference here is, this needs material and the soul needs God. So both are like this.
So somehow you have to bring the middle path and try to balance both of them. When people, like, don't balance it, when people just fall into material life completely, that's where they're, camouflaged or completely, covered with maya, and they start getting the mahishasura quality, which is a low quality, which might be greed, which might be anger and everything. So a person who balances, so if you also see, Buddha also talks about balancing. So Kali Yuga is completely about balancing. In Treta Satya Yoga, it was completely about, spiritual upliftment and everything, because they had that much amount of power with them. But let us, come to this understanding that we are in Kali Yuga. We have to, go with the balanced path. So coming back, the Jambu Savari, where, the high, very, very grand paraphernalia and very grand procession, where we take Chamundeshwari to the procession. It is basically, to commemorate the fighters in the society. It is basically to, give them that fearsome, I mean, give them that strength that you have done, you have contributed to the country, you fought for your country, you fought for the good for your country. So that's, this entire festival is completely worldwide famous. If you are coming down to Karnataka and want to watch the 9 days Dashera at Mysore, I would really welcome you all. It's a very spectacular view, but yet there are many meaning into it, like as I told, what that Jammu Savari means, what Ayut Puja means, and what the 9 days mean. So moving forward, the real, I mean, into more about Navaratri esoteric meaning, it's basically using the Navavidya Bhakti Marga, which is 9 types of Bhakti. In all 9 types, sometimes it's not possible. So among that 9, we can choose one or two which we can do it. So basically, spiritual practices should be lovable. You should love to do it. It should not be a pressure on your head, like, oh my God, I've not done my reading, I've not done my practices. Oh my God, I mean, God will not love me. Not like that. You're not supposed to do the spiritual practice like that. It should be love, or it should be part of like how you brush, how you take bath. So it should be similar to that. So you can choose any one simple bhakti marga among the 9. So it is basically to destroy all the lower qualities, which are demons, the obstacles to our spiritual life, using the weapon of discipline and moderation understanding. So we should always think that, some people say that, Are, why are you supposed to do all these spiritual practices? God has given this life to, mauj karna, ash karna. Baad mein Bhagavad Gita pakdo, baad mein japa mala pakdo. Why you're so young, or like, even if you're in your mid 40s, also people say you have to earn so much. But there's always a moderation, right? So if a diabetic person have a lot of sweet carbs, what will happen to him? Ultimately, he'll lose his body, or he'll just be bedridden. He can't do anything. So we should always remember that, moderation is the best part for Kali Yuga, where we have to balance both our spiritual practices, both our mundane practices. So again, understanding the modern understanding, knowledge, the victory in the form of wisdom, which will ferry us in the material life, is Vijayadashmi. So finally, which day? What is called Vijayadashmi? So here, the 9 days, we have like, oh my God, this is 9 days of Navaratri. We should do our practices. Let's do it. We'll do a lot of difficulties, and we'll try to do all those japa, reading Lalita Sastrama, doing that, this, and finally Vijayadashmi will come, and we'll say that yes, finally 9 days we have done all these things, and the 10th day or the 11th day, you'll be like again back to your own life, like, who will do japa, who will do read Lalita Sahasrama, come back to it. No. So this is just like, Ma Durga is giving you like a prelims, like a little, like a prelims where what you should do, but you should start continuing. So here, Vijay Dashmi means that finally I've started controlling the lower qualities in me. So I'm sure, amongst many people here, you would have come across this, that when you open a book, it happens to me also. When you open a book, I mean, you bring a book, and also you bring a phone with it. So you start reading a book and you see a notification, and you're like, okay, let's see the notification. Let's see the notification. You'll end up seeing the notification. You'll go to Instagram, Facebook, news, that, this, and the book, or the theosophy book just stands sideways. So here again, Navaratri, what it talks is,
if the notification comes, unless and until it's very urgent, you just forget that notification and do your austerity, which is reading the theosophical book or any Shastra book. So Vijayadashmi is when, like 9 days we have completely practiced, and finally the 10th day we are like, even if the notification call comes, we are sitting, reading our books, doing our japa, reading all the Sahasranama, Lalita Sahasranama and everything. So that's where the Vijayadashmi means that finally I've cut down my lower energies and I've concentrated on what I have to do. So two things we have to concentrate using this human body is, one, we all want to become very rich, we all want to become super famous, everything. Yeah, that's fine. We are all in human body, we aspire to be, we can be, but we should not forget the ultimate goal is that, we should say God, during the Vijayadashmi day, every day is a Vijayadashmi for us. We should say that we have won. What we have won is, lowering our lower energies. We should say God that finally I've, subdued all my lower energies and I've won the battle. And that's what God is also looking forward from us. It's not like, uh, it's my point of view. If, like, God, I've done this puja, I've done that donation, I've done that homa, this homa, yeah, God will appreciate it, no problem. But someone else has done the homa, you're sitting there, but what you personally do for God, what communication you have between you and God, how much thick and strong is the communication between you and God, that's what matter at the end of the day. What matters at the end of the day, that, yeah, finally I'm not Harshal, I'm part of God, I have to go back to him. So ultimately this Harshal will just end this lifetime, and then I have to take another body, another name and everything. But one thing will not change is, I'm part and parcel of Lord Krishna, Lord itself. That we are not supposed to forget, but often we forget and we think, I am Harshal, I do this, I do that, I am successful, I am famous. But it's not me, it's actually, a part given by the God. So here a very interesting quote I would make it here is, break it, then it can penetrate. What break it? What should we break? And then what can penetrate? We have to break the unwanted, the undesire to reach our goal with the help of a teacher, of a divine grace, is to gain this. The right knowledge is required, accompanied with a great will to move in the right direction. So we have, we have to like break all those unwanted thoughts in our mind and unwanted desires in our mind and go in the direction. Which direction? To go in the direction of God. So finally, when you break, so when 2 Hanuman minutes just, left. sorry? 2 minutes left. Yes, yes. So finally, when you break it, God enters your heart. So when Hanuman tore his, that's where Ram and Sita was there. So again, I would talk about one phrase is, cut it and paste it. What makes you better? We need to choose and validate which is right over good or bad, because good and bad is one's own perception, but right is universal, and it is a divine rule. Move accordance to the divine plan, cutting off human plans. Choose a right over pleasant or good. With consistency in aim and effort, man can be successful. All are on the same path, but differ in the distance they have to travel so far. Like the mother, we need to adopt compassion and forgiveness to other souls and help them to reach their goal in the spiritual path. Some are immature mortals, and as they travel on earth, just started and unaware of the divine knowledge, like Mahishasura Mardini. So the takeaway for home is, we have a lot of time to think, to grow, and to do, and it's time to enjoy. Is an absolutely wrong idea about oneself, like demons indulge only in material enjoyment, which ends in self destruction. What we are doing today has to be equally shared, meaning moderation and balance, physically, emotionally, and mentally. Difficulties make the razor sharp. Many are called, few are chosen. This Navaratri is for all, but the one who understands the true meaning is called for self realization, self effort, self discipline, and self control, and are very important weapons to slay the demons.
Mother Shakti is with everyone, but to recognize and to direct it accurately can be done with the grace of the God and our will energy. Purpose, the divine to know the purpose of the divine is to know the purpose. Many prayers are the best. My prayers are the best wishes to all. Shall the mother bless us with the 5 Ds to all of us to slay the demon Mahishasura inside us. So what are these 5 Ds? Dedication, Shraddha, devotion, Bhakti, discrimination, Viveka, determination, Nirdhara, discipline, Shasan. And I'll get introduced to this 4 applications or the 4 apps which we usually use our phone. So the 4 apps are simple: follow the master, fail the devil, fight till the end, finish the game. So use these 4 apps and you will reach the Lord. I'm not here by chance. My incarnation will not go to waste by any chance. So we all in this Navaratri give our best to improve ourselves on the path of becoming a self realized person. Thank you so much. Thank you, Arshal. You have given a complete package of Navratri in a very wonderful way. Hitalben, आपका video start कीजिए, please. Thank you. Harshal, be there. We'll be coming back for the final comments. Yeah, sure. जी सर. सर स्टार्ट कर दो. Just a minute. Yeah, Hitalji, you can start your speech in Gujarati for part 2. Thank you. Part 2. Yeah, go ahead. Go ahead. Thank you, sir. Part 2. તેને તોડો પછી તે ઘૂસી શકે છે. આપણે શિક્ષક અને દૈવિક કૃપાની મદદથી આપણા ધ્યેય સુધી પહોંચવા માટે અનિચ્છનીય અને અનિચ્છનીયને તોડવું પડશે. આ મેળવવા માટે સાચી દિશામાં આગળ વધવા માટે એક મહાન ઈચ્છા શક્તિ સાથે યોગ્ય જ્ઞાન જરૂરી છે. તેને કાપો અને પેસ્ટ કરો જે તમને વધુ સારું બનાવે છે. આપણે સારા કે ખરાબ પર કયો અધિકાર પસંદ કરો એ માન્ય કરવાની જરૂર છે. કારણ કે સારું અને ખરાબ એક વખત પોતાની ધારણાઓ છે, પરંતુ અધિકાર સાર્વત્રિક છે અને તે દૈવી નિયમ છે. માનવ યોજનાને કાપીને દૈવી વિમાન અનુસાર જ આગળ વધો. સુખદ સારા પર અધિકાર પસંદ કરો. ધ્યેય અને પ્રયત્નમાં સ્થિરતાથી પણ માણસ સફળ થઈ શકે છે. બધા એક જ પાથ પર છે, પરંતુ તેઓએ અત્યાર સુધીમાં મુસાફરી કરી છે તે અંતરમાં અલગ છે. માતાની જેમ આપણે અન્ય આત્માઓ પ્રત્યે કરુણા અને ક્ષમા અપનાવવાની જરૂર છે અને તેમને આધ્યાત્મિક માર્ગમાં તેમના લક્ષ્ય સુધી પહોંચવામાં મદદ કરવાની જરૂર છે. કેટલાક અપરિપક્વ મનુષ્યો છે, જેમ કે પૃથ્વી પર તેમની મુસાફરી હમણાં શરૂ થઈ છે અને મહિષા જેવા દૈવિક જ્ઞાનથી અજાણ છે. ટેક અવે અમારી પાસે વિચારવા, વધવા, કરવા માટે ઘણો સમય છે. આનંદ કરવાનો સમય છે. પોતાના વિશે એકદમ ખોટો વિચાર છે. જેમ કે રાક્ષસો માત્ર ભૌતિક આનંદમાં જ પ્રવૃત્ત થાય છે, જે આત્મવિનાશમાં પરિણમે છે. જે આજે આપણે જે કરી રહ્યા છીએ તે સમાન રૂપે વહેંચાયેલું હોવું જોઈએ, જેનો અર્થ શારીરિક, ભાવનાત્મક, માનસિક અને મધ્યસ્થતા અને સંતુલન છે. મુશ્કેલીઓ રેઝરને શાર્પ બનાવે છે. ઘણાને કહેવાય છે ને કે થોડા પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. આ નવરાત્રી બધા માટે છે, પરંતુ જે સાચા અર્થને સમજે તેને આત્મજ્ઞાન, આત્મપ્રયાસ, સ્વસ્વિષ અને આત્મનિયંત્રણ એ રાક્ષસોને મારવા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ શાસ્ત્રો છે. માતૃશક્તિ દરેકની સાથે છે જ, પણ ઓળખવા માટે ભગવાનની કૃપા અને આપણી ઈચ્છા શક્તિથી તેને સચોટ રીતે ડાયરેક્ટ કરી શકાશે. હેતુ જાણવા માટે પરમાત્માને પ્રસ્તાવ આપો. મારી પ્રાર્થના અને સૌને શુભેચ્છાઓ છે. આપણી અંદરની રાક્ષસ મહિષાને મારવા માટે માતા આપણા બધાને 5D સાથે આશીર્વાદ આપશે. જેમ કે 1. સમર્પણ એટલે શારદા,
ભક્તિ, ભેદભાવ એટલે વિવેકા, નિશ્ચય એટલે નિર્ધારા, શિસ્ત એટલે શાસન. અને 4 એપ્લિકેશન્સ છે. માસ્ટરને અનુસરો, શૈતાનને નિષ્ફળ કરો, અંત સુધી લડો, રમત સમાપ્ત કરો. સંજોગ વશા હું અહીં નથી, પણ મારો અવતાર કોઈ પણ સંજોગથી વ્યર્થ જશે નહીં. તેથી આપણે બધા આ નવરાત્રિમાં બનવાના માર્ગ પર પોતાને સુધારવા માટે અમારું શ્રેષ્ઠ આપીએ છીએ. સર, માય સ્પીચ ઇઝ ઓવર. या थैंक यू आभा जी, आपका स्वागत है। आप अपना पार्ट 2 अदा कीजिए। धन्यवाद। हाँ जी, तो आइए अब हम इसके सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट जो पार्ट था इस पे चर्चा की थी कि बेसिकली है क्या नवरात्रि, क्या किस क्यों मनाया जाता है। तो बेसिकली बताया, जो देवी है वो बेसिकली एक ऊर्जा की प्रतीक है। उस ऊर्जा की उपासना होती है, उसको हम अपने पूरे जीवन में लागू करें, उसी को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो बात हुई थी कि हमारी जो लोअर एनर्जीज हैं, जो हमारी निम्न ऊर्जाएं हैं, उनको हमें ऊपर ले जाना है, उनको हमें कैसे प्योरीफाई करना है। और वो बेसिकली हमारे अंदर ही है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हमारे अंदर ही। लेकिन हमें किस प्रकार से संशोधन करना है, अपनी जो नकारात्मक ऊर्जा है, अपनी जो नेगेटिव एनर्जी, उनको प्योरीफाई कैसे करना है, इस पे हम लोगों की बात हो रही थी। एनर्जी हमारे अंदर ही है, तो काम तो हमें अपने ऊपर ही करना है, कहीं और बाहर नहीं हमें कुछ करना है, अपने ऊपर ही काम करना है। तो पहले तो एक ये फंडा हमें समझना है। अब आया कि तोड़ दो तभी प्रवेश। क्या तोड़ दो? जो हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं, जो हमारे अनवांटेड थॉट्स हैं, जो हम इतना सोचते हैं, अनर्गल जो है वो भरे हुआ है। हमारा जो मेंटल बॉडी है उसमें ये सारी चीजें भरी हुई हैं, और एक जन्म की नहीं है, इसमें बहुत जन्म जन्मांतरों के संस्कार जिनको हम कहते हैं वो पड़े हुए हैं भरे। तो हमें क्या करना है इन 9 दिनों में? ये प्रतीक है 9 दिन कि हम किस प्रकार से डिसिप्लिन्ड वे में, एक अनुशासित वे में, साधना के द्वारा। साधना का मतलब ये नहीं है कि आप केवल तपस्या वन में करने चले जाएं, अपने ऊपर लगातार तपस्या आप अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। जैसा कि अक्षल जी ने पहले बताया कि भाई हमें संसार के काम भी करने हैं, आप संसार में रहते हैं तो संसार से अलग नहीं हो सकते हैं, तो आपको सांसारिक लक्ष्य भी पूरे करने हैं। उसके लिए जिन वेपन्स की आपको जरूरत पड़ती है, जैसे किसी का वेपन पेन भी हो सकता है, किसी का वेपन कुछ हो सकता है, जो जो उसके व्यवसाय उसके हिसाब से उसके वेपन से। एक ब्राह्मण का, लिखने वाले का, टीचर का जो है वो सबसे बड़ा जो वेपन है उसका पेन ही होता है, उसकी कलम होती है, वो कलम से दूसरों को परास्त कर सकता है। इसी प्रकार उन वेपन्स को तो हमें शार्पन करना है, लेकिन साथ ही साथ डिटैचमेंट भी लाना है, इन ए वेरी डिटैच्ड वे। हमें उनमें आसक्त नहीं होना है। गड़बड़ी कब होती है? जब उनमें हमारी आसक्ति आती है, अटैचमेंट जब बढ़ता है, हमारी जो डिजायर्स हैं अनवांटेड जब वो आ जाती हैं, तब हम अपने लक्ष्य से दूर चले जाते हैं, और वो लक्ष्य है हमारा सेल्फ रियलाइजेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कब ये वो डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करेगी? जब हम धीरे धीरे अपने अनवांटेड जो थॉट्स हैं, जो हमारे अवांछित विचार हैं, जिसको कह सकते हैं नकारात्मक भावनाएं हैं, उनको हम कैसे कैसे प्योरीफाई करेंगे, उनको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। एक इस ये बैरियर्स के रूप में जो हमारी ग्रोथ को रोके हुए हैं, बेसिकली हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो इनको हमें अनब्लॉक करना होगा, इनको निकालना होगा धीरे धीरे, जिससे हम उस डिवाइन की हेल्प से अपने ऊपर काम करके अपने उस लक्ष्य तक पहुंच जाएं। और इसके लिए फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है हमारी विल पावर, जिसको हम मजबूत इच्छा शक्ति कहते हैं, उसकी बहुत जरूरत है, वो बहुत रिक्वायर्ड है। अब क्या है, किस प्रकार से हम करें? भाई प्रश्न तो हो गया बनाओ, लेकिन करें कैसे? तो जो हमें बेहतर बनाना है बताता है, यानी जो हमें बेटरमेंट की ओर ले जाए, हम उसको जो है यूज करें। जो भी चीज हमें बेटर बनाती है ना, गुड बेटर बेस्ट, जो बेटर बेटर धीरे धीरे जब हम अपने आप को सुधारते जाएंगे तो धीरे धीरे ग्रो करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि भाई किस प्रकार से कहें, क्या अच्छा है, ये क्या बुरा है? ये बेसिकली मेंटल बॉडी के काम है, ये बेसिकली हमारे मन की धारणाएं हैं। यदि हम लोअर मेंटल बॉडी से सोचें तो हम अपने हिसाब से अच्छे बुरे की पहचान कर लेते हैं, लेकिन डिवाइन में ऐसा नहीं। अच्छे बुरे में भी विवेक शक्ति का होना बहुत जागृत है। जब प्रॉपर हमारे अंदर विवेक शक्ति जागृत होगी फ्रेंड्स, जिसको हमने डिस्क्रिमिनेशन कहा है,
तब हमारे अंदर वो बात आएगी कि क्या चीज हम छोड़ें और क्या चीज हम रखें। ये दोनों चीजों की है। इसके लिए हमें अपने, अगेन वही कहूंगी मैं कि ज्यादातर जो वर्ल्डली डिजायर्स हैं, हमें उन्हें छोड़ के जो डिवाइन हमारा मार्ग है, जो हमें डिविनिटी की ओर ले जाता है, उसकी ओर बढ़ना चाहिए। और सनातन का मतलब ही एटर्नल ही है। जिसको हम सनातन कहते हैं, हम सभी शाश्वत हैं, ये तो हमें मालूम है। ये तो खाली एक हमारी बॉडी है, ये खाली ऊपरी खोल है, तो वो सभी के अंदर डिविनिटी है और वही एटर्नल है। हम लोग एटर्नल हैं, शाश्वत हैं, सूर्य और चंद्र से भी पुराने हैं। तो हम अपने दिव्य स्वरूप को पहचानते हुए जो सही है उसको यूज करें, विवेक का अनुसरण करते हुए, विवेक को लेते हुए। फिर सुखद अच्छे से ऊपर, जो हम कहते हैं कि जो हमारे मेरे लिए सुख है मैं उसको चुनता हूँ, वो गलत है। या जो मेरे लिए अच्छा है मुझे वो चुनना पड़ता है। जो मेरे बेटरमेंट के लिए है, भले ही उससे मुझे अनुभव अच्छा नहीं हुआ, लेकिन विच इज फॉर माई बेटरमेंट, उसको हमें करना है। और निरंतरता इसके लिए बहुत जरूरी है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी, वो दोनों बहुत जरूरी हैं। दूसरे, एक चीज और कही थी इसमें कि भाई सभी अपने अपने मार्ग पे चल रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी उस डिविनिटी को फॉलो कर रहा है और हर कोई ही डिवाइन है। लेकिन फिर क्यों अंतर हो जाता है? क्योंकि उसके कर्माज, उसके संस्कार अलग अलग है। इस वजह से हमें ये लगता है कि ये पीछे है, लेकिन उस वननेस को आप देखें, उसके प्रति जो भी पीछे है उसके प्रति हम हीन दृष्टि से नहीं देखें। वो उसका मार्ग है, वो उस मार्ग पे आगे बढ़ रहा है। और ये भी हो सकता है कि जब हमारे अंदर अहम आ जाता है तो कभी कभी जो हमारे पीछे चल रहा है वो हमसे आगे चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक निरंतरता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो निरंतरता बहुत जरूरी है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। वो जो कछुए और खरगोश की कहानी आती है, तो खरगोश जो था उसके अंदर अहम आ गया, वो सो गया, और वही कछुआ जो है बाजी ले गया, क्योंकि उसके अंदर निरंतरता थी। तो हमें छोटी छोटी कहानियों से सीखना चाहिए। लेकिन सभी एक मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन दूरी है, डिस्टेंस है, बस फर्क इतना है। वो उसके अपने लक्ष्य हैं और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। हर व्यक्ति, हर सोल अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, अपने संस्कारों को लेते हुए। और ये गोल्स भी हमने अपने खुद के ही बनाए हुए हैं। तो हम अपने ऊपर काम करें। इसीलिए हमने कहा है कि हमने सोल्स को भी कई भागों में बांटा है। जैसे बेबी सोल्स हो गए, यंग सोल्स हो गए, मेच्योर सोल हो गए, एडल्ट सोल हो गए, ओल्ड सोल हो गए। तो बेबी सोल अपने हिसाब से ही सोचेगी, क्योंकि उसके अनुभव उसको उतना ही ले जा रहे हैं। यंग सोल अपने हिसाब से सोचेगी। तो सब बेसिकली बढ़ रहे हैं, सब उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन सबके अपने अपनी गति है, अपना अपना प्रयास है, उसके हिसाब से सब आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अभी तो मैं बहुत यंग हूँ, जैसा बताया, मुझे अभी क्या जरूरत है डिविनिटी की, अभी जब बुढ़ापा आएगा तब देख लेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। समय बहुत कम है और हम ये सोचते हैं कि ये हम ये आनंद ले लें, मालूम पड़ा हम उन्हीं इच्छाओं में, उन्हीं डिजायर्स में फंसे रह जाते हैं और अपने लक्ष्य की ओर भूल जाते हैं। क्योंकि इसी को माया कहते हैं। माया का मतलब ही कि जो आपको कंफ्यूजन में डाल दे। तो चीजों का उपयोग करना है, ऐसा नहीं है। धन भी बुरा नहीं है, सब चीजों का उपयोग करो, लेकिन इन ए बैलेंस्ड वे। हमें अपना संतुलित, जैसे बुद्ध ने भी कहा था, संतुलित मार्ग अपनाना है, क्योंकि हमें रहना भी है, सारे दायित्व भी पूरे करने हैं। और इस वक्त जो हमारा समय चल रहा है, उस वक्त हम पूरी तरीके से ये नहीं कर सकते हम सब कुछ छोड़ दें। नहीं छोड़ा जा सकता। धन भी जरूरी है, लेकिन धन को इन डिटैच वे हम अपनाएं, उसमें फंसे नहीं। डिजायर्स हमें फांसती है। तो हम अपने ऊपर बेसिकली काम करें। इसको मैं बार बार कहूंगी कि बेसिकली हमें काम अपने ऊपर करना है, और उसके लिए संतुलन बहुत जरूरी है। मानसिक संतुलन बहुत जरूरी है, शारीरिक संतुलन भी जरूरी है, इमोशनल संतुलन भी बहुत जरूरी है, भावात्मक संतुलन। सभी चीजों को इन अ बैलेंस्ड वे करना है, ये भी और ये भी। तभी जो है हमारा जीवन धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकेगा। प्रॉब्लम्स आती हैं फ्रेंड्स, मानव जीवन है, संसार में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन इन कठिनाई को हम इन्हें पॉजिटिव वे में लें कि वो हमें मजबूत बनाने के लिए आएंगी। बेसिकली जिसको जितनी कठिनाइयां वो उतना मजबूत होता है, यदि वो उन्हें पॉजिटिव वे में ले। तो ये बहुत जरूरी है कि कठिनाइयां ही हमारे बेसिकली हमारी टेस्टिंग है हमें आगे बढ़ाने के लिए।
तो ये कहते हैं कि बहुतों को बुलाया जाता है किसी मीटिंग में, लेकिन चुना बहुतों को। तो ईश्वर, ईसा ने भी कहा था कि उन लोगों को चुना गया है जिनके ऊपर कठिनाइयां ज्यादा आएंगी, क्योंकि उन्हीं की टेस्टिंग है। जब वो आगे बढ़ेंगे तो वो काफी आगे निकल जाएंगे। तो हमें इन नवरात्रि में ये जो 9 दिन हैं, खाली 9 दिन ही नहीं करना है, अपने पूरे जीवन को ये हमें सिखाने के दिन है, सीखने के दिन है। हमारे हमारे पूरे जीवन में हमें इनको साथ रखना है। और ये डिवाइन पावर हमेशा हर के साथ है फ्रेंड्स। वो डिवाइन पावर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। खाली हमें पहचानना है वो शक्ति हमारे साथ है। अब यह है कि उसका सही रूप से हम उसको रिकॉग्नाइज करें और ये सोचें कि ईश्वर ने हमें ये मौका दिया है, और फिर हम अपनी विल पावर को भी यूज करें, अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको अपने उस परम लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए यूज करें। अब ये जो क्या क्या चीजों की जरूरत है, किन किन गुणों की जरूरत है, उसके बारे में हम बात करेंगे। माँ के रूप बेसिकली दिव्या ऊर्जा के ही विभिन्न रूप हैं, उनकी हमें आराधना करती है, ये बेसिकली हमें सिखाते हैं। तो क्या क्या चीज हैं? डेडिकेशन यानी समर्पण बहुत जरूरी है किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। यदि समर्पण नहीं होगा फ्रेंड्स, तो लक्ष्य की प्राप्ति बहुत मुश्किल हो जाएगी। दूसरा भक्ति, डिवोशन बहुत जरूरी है। डिवोशन के बिना जो है हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। हम लोगों ने बहुत से लक्ष्यों के एग्जाम्पल, तो जब तक डेडिकेशन और डिवोशन भी नहीं आएगा, तो 5 Ds का जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। समर्पण भी उतना ही जरूरी है, भक्ति भी उतनी जरूरी है, क्योंकि भक्ति समर्पण से थोड़ा और ज्यादा है। फिर विवेक बहुत जरूरी है, डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट इज गुड एंड बैड, सही पहचान के फिर हम उस पर आगे बढ़ें, ये बहुत जरूरी है, जो हमारी प्रज्ञा से रिलेटेड है, हायर विजडम से रिलेटेड। देन दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। विदाउट डिटर्मिनेशन मार्ग छूट भी सकता है। हमने समर्पण भी कर दिया, हमने डिवोशन भी ले लिया, डिस्क्रिमिनेशन भी आ गया, लेकिन यदि डिटर्मिनेशन नहीं है तो भी लक्ष्य की प्राप्ति जो है वो बहुत दूर होती है, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन दूसरों के द्वारा लादा हुआ नहीं, स्वानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। ये अनुशासन कोई दूसरा नहीं कि दूसरा हमें डंडे के मार पे कर रहा है, वो अनुशासन अनुशासन नहीं है, वो तो शासन है। अनुशासन मीन्स खुद का, जो अंदर से अपना आए, अपने ऊपर हमें सेल्फ कल्चर करना है अपनी सभी चीजों को, यदि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमारे 4 हमें एप्लीकेशंस पे काम करना है, जो हमारी एक्टिविटीज हैं, क्या हम करें, क्या एक्शंस लें, वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो जो हमारा मास्टर है, क्योंकि मास्टर हमसे ज्यादा अनुभवी है, उसने हमें जो बताया है, यदि हम उसको फॉलो करें विद डेडिकेशन, विद डिवोशन, तो होगा। दूसरा, जो हमारे अंदर डिमन बैठा हुआ है, हमारे नेगेटिव थॉट्स के रूप में, हमारी नेगेटिव इमोशंस के रूप में, उन सबको जो है हम फेल कर दें। वो जो नेगेटिव ऊर्जा है जो हमें बार बार खींचती है निचले लोअर वर्ल्ड की ओर, उनको हम फेल करें अपने खुद के प्रयत्नों द्वारा, सेल्फ डिसिप्लिन के द्वारा, अंत तक लड़ें। फ्रेंड्स, एक चीज और है, फाइट टिल एंड, अंत तक लड़ना बहुत जरूरी है। शुरू में जो लोग बड़े मेहनत से लड़ते हैं, लेकिन यदि रास्ते को आधा छोड़ दिया और फिर गेम को बीच में छोड़ दिया, वो कभी नहीं जीत पाते हैं। इसीलिए संस्कृत में कहा भी गया है कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो काम को शुरू ही नहीं करते हैं, कि हम तो इसमें पास ही नहीं हो पाएंगे, हम शुरू ही नहीं करते। दूसरे लोग काम को शुरू तो करते हैं, लेकिन वो फिर बीच में छोड़ देते हैं, वो भी सफल नहीं हो पाते। तीसरे लोग हैं कि जो किसी काम को शुरू करते हैं और उसको जब तक अंजाम नहीं दे देते हैं, उस काम को अंतिम सिरे तक नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक वो डटे रहते हैं मैदान में। तो यही चीज है, फाइट टिल एंड, हमें अंत तक लड़ना है। ये जो है, ये जो ऊर्जा है, ये हमें माँ ही देती है, इसीलिए ये नव दुर्गाओं का अर्थ है। और बाद में खेल समाप्त करें। ये जो भी कुछ हो रहा है, दिस इज प्ले, ये जो भी है ये डिवाइन प्ले है। तो उसमें हमारा भी एक पार्ट है प्ले करने का। जीवन को हम खेल समझें कृष्ण की तरह से, कि जीवन एक खेल है, एक प्ले है, एक नाटक है। इसमें यदि हम घुस जाएंगे तो क्या होगा, हम इसमें अटक जाएंगे, ये हमें बांधता है। तो माया में जिसको फंसना कहते हैं, तो खेल की तरह खेलें, जैसे खेल में होता है
प्लेयर कोई जीतता है, कोई हारता है। तो दिस इज इसी तरीके से हमारा जीवन है। दिस इज द प्ले ऑफ डिवाइन। इसमें सभी लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं, तो उसमें आपका भी एक पार्ट है। इसको ऐसे समझिए, आपका भी एक पार्ट है, आपका भी एक रोल आपको दिया गया है। तो रिकॉग्नाइज योर रोल, अपने उस रोल को पहचाने कि मैं बेस्ट कौन सा दे सकती हूँ, मेरा बेस्ट रोल कौन सा हो सकता है, और फिर खेल को समाप्त कर दें। हमारे यहाँ इसीलिए विसर्जन की बड़ी अच्छी प्रथा है। किसी चीज का हमने क्या किया, क्रिएशन किया और फिर उसको विसर्जन कर दिया, क्योंकि ये सारी चीजें प्ले हैं। गणेश त्योहार हो गया, नव दुर्गा में भी हम क्या करते हैं, नव दुर्गा की बहुत सुंदर मूर्ति बनाते हैं, उनकी 9 दिन आराधना चलती है, पूरे डेडिकेशन के साथ चलती है, और अंत में विसर्जन कर देते हैं कि जो चीज हुई है उसका विसर्जन भी होना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्ले का भी तो अंत होगा ना, उस खेल का भी अंत होगा। तो खेल को समाप्त करें। दूसरा, इस पूरे डिवाइन प्ले में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्रेंड्स। अपने जीवन को बेकार न समझें, आपका एक अहम रोल है। शिव सूत्र में बड़ा अच्छा आता है कि हर का एक पार्ट है, उस पार्ट को बिना अदा किए हुए संसार से न जाए। अब ये आपके ऊपर है कि आप आपका क्या रोल है, आपका क्या पार्ट है, आपका क्या बेस्ट है, उसको पहचानें। हर आत्मा का अपना अपना रोल होता है, अपना अलग अलग क्वालिटी होती है फ्रेंड्स। तो उसको पहचानें कि आप यहाँ संयोग से ऐसे ही नहीं आ गए, आपकी पूरा योजना है इसके पीछे, आपका एक इम्पोर्टेंट रोल है, डिवाइन की ओर से निर्धारित है, और ये आपका जीवन बेकार न जाए। जिस रोल को प्ले करने के लिए आए हैं, उस रोल को पहले तो पहचानें कि मैं क्या कर सकती हूँ इस डिवाइन के रोल में, उसको पहचानें। वो साधना द्वारा ही होगा संभव, वो पहचानना। और फिर अपने रोल को बेस्ट खेलें, जो आपको रोल दिया गया है, और फिर उसको छोड़ दें, क्योंकि है ये खेल ही, इसको समझाएं। तो इस नवरात्रि जो है, बेसिकली ये जो नवरात्रि है, इसीलिए इनको ऑस्पिशियस माना गया है बहुत ज्यादा, क्योंकि इन दिनों ऊर्जा का प्रवाह बहुत होता है फ्रेंड्स। इन दिनों जो साधक है, तो खाली हम इसको गरबे तक ही न लें कि हमें बस रात में गरबा खेलना है और बस ये हमारी नवरात्रि हो गई, नहीं। हमें अपने बेसिकली अंदर काम करना है, अपनी साधना करनी है बेसिकली। तो रिकॉग्नाइज योर रोल, अपने उस रोल को पहचानें और बेस्ट प्ले करें, और फिर हम जिससे सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बहुत तीव्रता से बढ़ें और अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, जो है आत्म साक्षात्कार। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू हु पेशेंटली हर्ड ईच स्पीकर। थैंक यू सो मच। जी तरल जी। ओके, नाउ थैंक यू आभा जी। और हर्षल जी, अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। हेतल जी, वीडियो ऑन कीजिए। और सारे लोगों से, हर्षवर्धन जी और राज जी, चंद्रकांत जी, अरुणिमा जी, डुबल जी, जो भी कुछ कहना चाहते हो वो शेयर कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं ये चाहूँगा, शिंदे जी आप भी हैं, कुछ कहना चाहते हो इस विषय पर तो स्टार्ट कीजिए। हर्षवर्धन जी, वीडियो स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। या सबसे पहले मैं चाहूँगा कि तीनों जो हमारे वक्ता हैं वे कुछ ऐड करना चाहते हो नवरात्रि के बारे में, या इसके जो आपने थियोसॉफी से कनेक्ट करके हर्षल जी बहुत अच्छे से बताया, उसमें अगर कुछ समय की उसमें रह गया हो तो ये समय है। आप तीनों के पास कि एक एक मिनट में आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। प्लीज गो अहेड। यस शिंदे जी। हाँ, या हर्षल जी, सबसे पहले आपने इसे किया है तो आपका मौका है, फिर हेतल जी या आभा जी जो भी कुछ कहना चाहें। I guess uh, what we could do here is together we join to kind of bring down or to realize what we have to do in this 9 days and continue it. Just not stop it in Vijayadashmi and say, God, that, oh, I'm done 9 days.
but to continue it till we reach the Godhead, till we reach realize our God realization and self realization. That's the current motive we have to do after taking the human birth. And yeah, that's my closing remarks. एन हर्षल, आपके रिमार्क पर मैं कहूँगा कि आपकी एक बहुत अच्छी आध्यात्मिक विषय पर या त्योहारों के बारे में या जन्माष्टमी हो, कृष्ण हो, इन सब की एक स्टडी बहुत अच्छी है आपकी। तो आपसे आग्रह ये है कि ऐसे विषयों पर बार बार जब भी आपके पास कुछ तैयार हो जाए, क्योंकि आप तो लगातार पढ़ाती हैं, सब लोगों को एक प्रीचिंग करती हैं, तो आप मुझे लिखिए। आपका बनाया हुआ चीज़ बहुत कॉम्पैक्ट होता है और उसमें एक अलग नज़रिया भी होता है, ऐसा मुझे महसूस होता है, पता नहीं और भी वक्ताओं को महसूस हो। तो एक्चुअली मैं आभा ये जी। एक और बात जी। कहना ऐड हाँ, बोलिए करना ना, चाहूंगी। बोलिए ना। तो एक्चुअली आई एम द को ऑथर, मैं को ऑथर, बट तो मेरी जो रिटन है तो मेन ऑथर इज माय मॉम। शी इज द गुड। वन हु एक्चुअली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स इट, वो जी। स्ट्रक्चर करती है क्या पॉइंट्स डालना है, वेरी क्या गुड। स्टैटिस्टिक्स डालना है। तो शी इज द मेन ऑथर, तो मैं तो बहुत डिलीवरी पार्ट में धन्यवाद। हूँ एंड शी इज आपने एक द स्पीकर और बैक दे एंड। दिया। अगली बार आपकी माताश्री को बोलिए कि वो इंग्लिश या हिंदी में कहें और आप इंग्लिश या हिंदी में कहें, तो मदर एंड डॉटर ड्यू विल डू वंडरफुल इन अ टीएस त्रिवेणी मीटिंग। यस, हेतल जी कुछ ऐड करना चाहती हूँ या आभा जी? प्लीज गो एड। फिर चंद्रकांत शिंदे और हर्षवर्धन जी हैं और भी लोग हैं। तरल जी, अभी हम शिंदे जी को और हर्षवर्धन जी को सुनना चाहेंगे, जी जी जी, ओके। क्योंकि काफी कुछ इसमें है। यस शिंदे जी, गो एड। थैंक यू हर्षल जी। कहाँ से आए आप हर्षल? Sir, if you remember me, I'm from Chennai. Amma, my mom's name is Gayatri. She used to often come to the. ओ गायत्री, हाँ, गॉट इट। सो नाइस, आई एम सर मच देखिए, आप इम्प्रेस्ड। चेन्नई में रहते हैं, हाँ लेकिन हाँ। आपका संगम हुआ है यहाँ त्रिवेणी में। Oh, yeah. Very nice. Nicely presented. All points were covered. I यस am यस, much वंडरफुल। impressed because you are a good lecturer, a good यस orator, यस यस। and presentation is wonderful. Even Abhaji we know well. She also translated it in Hindi very nicely. Both whole program was wonderful. हेतल Wonderful. जी ऑल्सो, शी इज न्यू कमर फ्रॉम Hetalji from Gujarat, no? गुजरात। या Yeah. I don't understand much Gujarat, but या all program was very good. What I want to say, to add this, we must relate this to the theosophy when we conduct such kind of programs. या Really, this Durga Shakti, which is within us and has this power to discern, that means when HPB says mind is the slayer of the real, slay the slayer. And here, Mahishasura Mardini, she slayed that Mahishasura. Here we can relate this. Mind can discern. We have the power to discern. We have the power to withdraw. We have the power to decide. We have the power to tolerate. And also we have the power to accept. And also finally we have the power to let go and be peaceful and cooperative with the nature. So all these 9 qualities, 9 virtues we have within us, and therefore all these 9 nights, one by one, kama, krodha, moha, lobha, mada, matsara, all these head repos are killed. This is what it is said. But what I want to add here is the human life. In human life, as Harshal has properly said, one has to learn living happily with the differences. There is difference between spirit and matter, but we must learn to live happily with the differences of this, because soul is longing to unite, soul is longing to go to Buddhic consciousness and Nirvanic consciousness.
but the matter is pulling it down. So such kind of human life, one has to learn living happily with the differences. And when we live happily, then this living happily life wave itself takes us to the higher and higher level where there is unity, and finally where there is no other. You know, there is the difference between Buddhic consciousness and Nirvanic consciousness. Buddhic consciousness is a wonderful feeling of unity with everything. But in Nirvanic consciousness, there is no trace of the feeling that I am one with the other, because there is no other. In that sense, that is the union, that is Nirvanic consciousness. And Buddhic consciousness, where we have this feeling of unity. So we must move from this feeling of unity towards this Nirvanic consciousness. What I want to add here is what should be our preparation. To know the feelings, your pure heart is needed. To know the pains of the other, sensitive consciousness is needed. To know the God or Master, living faith is needed. And to know the man himself, human values are needed. And to bring the golden age, noble ideas, beautiful thoughts are needed. And to live peacefully and abundantly, money is not needed, but a healthy, a clean life is needed. That is what we are teaching in Theosophy. And this Durga Puja, Mahishasura Mardini, so all Yes. these evil qualities need to be slayed. Slay the slayer is the message of HPB. I connect it with this. Thank Yes, you, sir. Harshal, very much. Congratulations for you. Meet me sometimes in Adyar. Okay. Yes, Harshadan ji, you can go ahead. And then we can also have a small glimpse of Sure. Mahishasur Mardini Archana is there. And we'll just have a small glimpse. But before that, Harshadan ji, go ahead. Yes, yes, yes. Today, it is really the most important discussion, rather the illustration. In that way, what Harshal Rajesh has delivered this particular lecture in the way that we can understand the importance of our festival. Mostly in India, the festivals are for the jubilation. And special, this festival of Navratri is a very vital kind of festival. It is the energy. It is a newness. It is the cultivation of certain habits. And altogether, it is the Garba playing and Garba singing. That is the culture. As well as Yes. Bhakti in Bengali style, which Yes. slow. Just now, Archana will show you after you have finished, sir. Yeah. It is the worship. See how many other attributes and especially what the particular life is enriched. That is the thing that we can understand. And you explained that it is with the seasons, it is with the solar force, solar change, and also the moon change. So Shardiya Navratri is also there, and the other Navratri, that is what we now celebrate. That Navratri is also very important in that way. So Gupta Navratri is still there. Yes. So in this way, when we go on fasting, so fasting is more important. It gives the vitality of life. So this is the season when we find that most of the cases are now there with the viral fever. And if you, yes, it is also the season Yeah. there you can have the immunity. When you go and just go with the playing of the Garba, the lot of energy is required, and the people say somehow they
evil things are there, it is totally incorporated with such kind of festivals. That is really the kind of dark side of the Yes, festival that Harshadan we ji. can understand. Yes. So, Harshal, you just had that explanation in the way that was really a kind of Harshal ji has yes. also done earlier on Janmashtami, I suppose, Harshal. Yeah, Am I correct? I know that. Harshal? And yes, Abhaji, Hello? you, Can you hear she's me, Harshal? no, she's not listening to Yeah. you. Harshal, can you hear us? Yeah, yeah. Okay, Yes, okay. I just said that you had done a wonderful thing on, I think, Janmashtami also earlier. Yes, sir. Yeah, thank you so much. हर्षवर्धन भाई एक 5 मिनट लईस एंड करता पहला अर्चना yes, जी you कैन यू जस्ट one, टर्न द कैमरा हेलो yeah, yeah. अर्चना जी कैन यू टर्न Sure. द कैमरा हॉरिजॉन्टली एंड चेंज द व्यू हेलो अर्चना अर्चना हेलो अर्चना कैन यू या कैन यू जस्ट चेंज द व्यू अनम्यूट चेंज द व्यू चेंज द कैमरा एंगल and show the entire idol. Can you hear me? Okay. Camera is not changing. Camera is not changing. Okay, then you can just show like that. Yeah. Yes. This is the Bengali way of making puja, and this is the puja where we are also very active. एंड यहाँ पर सारी चीज बड़ी ट्रेडिशनल होती है और जो आपने हर्षल जी आज बोला ना एनर्जी, तो ये जहाँ जब हवन वगैरह होता है तो वाकई में एक अलग तरह की एनर्जी फील होती है पूरे मंडप में। ये हम लोग पिछले 10 साल से महसूस कर रहे हैं, ये 10वां साल है और बहुत ट्रेडिशनल वे में वहाँ पर मंत्रोच्चार होता है और उसके बाद जो वाइब्रेशन आते हैं वो बहुत अद्भुत होते हैं। बस इतना ही मैं शेयर करना चाहता था। तो दुबल जी कुछ कहना चाहते हैं आप, वरना हम फिर समापन। ओके अर्चना जी, थैंक यू सो मच। This is the right occasion of Navratri, and you selected the nice subject pertinent to the celebrations, and really it was wonderful. And a lot of esoteric meaning of Navratri was explained with the sloka and mantras. It was really wonderful because we have been listening this thing, but the esoteric meaning was never known to us, which was explained by the speakers. It was really nice, but unfortunately nowadays we see lot of places the garba and the music festivals with disco dandiya and all the charm is going towards the materialization and commercialization. Whereas the esoteric meaning, if it is known, then really we are clinging to the nature, why it is there. And even one more thing I have to add is that during this festival in the temple and in some home near the temple, we plant jwara. ગુજરાતીમાં આપણે જ્વારા વાવીએ છીએ નવરાત્રી વખતે 9 દિવસ માટે. So in Hindu tradition, planting the tree or a plant near a temple or a shrine dedicated to a deity like Ambe Mataji, such practices are not just spiritual but also have ecological significance. Here are some reasons why planting specific tree or plants near Ambe Mataji temples is important. One is the spiritual significance. Offering to the goddess. Planting trees or the plants is seen as a way to offer something to the goddess. Then purification of the environment. Plants, especially medical or sacred plants, are also symbolic representation of purifying the soul and mind in the presence of the divine. And third one is symbol of prosperity. In many cases, plants are symbol of prosperity, growth, and fertility, which align with the goddess nature as a provider of well-being and abundance. So, in our tradition, whatever is being done, which has been forgotten, now this our today's webinar has given us the significance and esoteric meaning. I really thank all the speakers and Paral Bhai for organizing such a nice thing.
Thank you. Thank you, sir. Thank you, Dhruval ji. Atul ji is Atul ji is here. Atul ji, can we go for the prayer? I think Harshvardhan ji, can you just end the program with the prayer? Yes, let me do it. Atulji Thank is you, still there. Unmute Atulji. Yeah, Atul ji is not unmuted. યસ, Start Atulji. એટલે તમે પ્રેયર કરાવી રહ્યા છો. Ah, હાજી હાજી. શ્રી હર્ષવર્ધન શેઠ, ગુજરાતી સોલ ફેડરેશનના પ્રમુખ શ્રી આપણે સમાપન પહેલાની ગાન કરાવશે. હર્ષવર્ધન શેઠ, આપનું સ્વાગત છે. Om Sarvena Sukhi Santu Sarve Santu Niramaya. Yeah. Sorry, I forgot. Sarve Bhadrani Paschantu. Yeah. Please go ahead, sir. Please end. Because I was just overjoyed. Paschantu ma kaschit dukh bhav bhave. सर्वे Om Shanti भवन्तु Shanti. सुखिनः Papaji, yes. सर्वे Sarve सन्तु santu निरामयाः niramaya. सर्वे Sarve bhadrani भद्राणि paschantu पश्यन्तु मा ma kaschit कश्चित् dukh bhav दुःखभाग् bhave. भवेत् ॐ Om Shanti शान्तिः Shanti शान्तिः Shanti. Thank you, everyone. Thank you for being here. Let's meet at next Tuesday. See you with a new. और सबको बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं. ये नवरात्रि की शक्तियां आपके जीवन को अच्छा करे, बुराइयों को आसपास अंत करे और खुशी का वातावरण आपके